Hi everyone, good evening. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, ठीक ଅଛି। आज की बुक्स रिसीव कलो पाइल कि बुक anyone who received book today? Okay, ठीक ଅଛି। सर ट्रैक आईडी मते आज मिली निश्चित आपको ओके ठीक अछि। मेसेज गलो जाइथिबो नै कि आज्ञा मेसेज हाउ ठीक अछि। हाउ ओके हम स्टार्ट करियो क्लास। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके सो लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करूथिले प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो किए कहब ऑब्जेक्टिविटी रे कौन कौन इश्यूज आसे खाली ब्रीफली गोटे गोटे पॉइंट जदि कहबा समस्ते। सर बायसनेस आसी जाय थाए ऑब्जर्वर रो Biasness good, then another point. Sir, sociology is a very subjective discipline. It varies across the society. Sociology कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर very good, complexity of human behavior. So human behavior is not consistent, right? Okay, good. Then any other point? सर वैल्यू लेवल वर्ड विद है Subhuni, value laden. Subhuni, you are not audible. Okay, anyone else? अब कौन problem था है? Objectivity achieve करिवे रे कौन problem है उठाए? आइडियोलॉजी रो इन्फ्लुएंस रही थाए Ideology. तो every human being has certain ideology. So study कला बेले तार impact आसी जीवा. Okay, good. तापरे आउ किछि अछि? Sir, obviously, ସବୁ society ର କିଛି certain values ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି କି sociology is very subjective and it changes over societies, like it is not constant all across the world. ओके ठीक अछि। तामे देखिबा जदी ठीक अछि जहा भी कहलो इट इज आल्सो ए गोटे पॉइंट छाड़ देलो सोशल कॉन्टेक्स्ट ता। ओके सो सोशियोलॉजी रे कोन हुए ना कॉन्टेक्स्ट मैटर्स इन सोशियोलॉजी ठीक अछि। सो व्हाट माइट बी ट्रू इन वन सोसाइटी मे नॉट बी एप्लीकेबल इन अनदर। जेमिति हमें कहूचे you go to the modern society intercaste marriage is very much acceptable, but you come to the traditional and rural societies intercaste marriage is not acceptable. So there is not consistency and sociology रे हमें सब बेले objectivity माने हला consistency, objectivity माने हला सब जगह रे सेम रहउतबो तो एठी तो डिफरेंट हे गला। सो सोशल कॉन्टेक्स्ट इज आल्सो इंपोर्टेंट कि सोशियोलॉजी रे हमरो गोटे सोसाइटी रे जोटा एप्लीकेबल आ गोटे सोसाइटी रे सेटा एप्लीकेबल न होई पारे ठीक अछि। ओके And sir, society is dynamic in nature. It changes, it's हाँ not constant हम्म like any other natural sciences. यस देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वैल्यू न्यूट्रलिटी पार्ट। देखो वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स। वैल्यू आमे एमति कहि परिबा ऑब्जेक्टिविटी प्रीसपोजेस वैल्यू न्यूट्रलिटी। कोन कहली ऑब्जेक्टिविटी
presupposes value neutrality। ता माने कौन, जदि तुमको प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी देखो लास्ट क्लास रे लास्ट को देखियो, लास्ट 20-25 मिनिट आम ऑब्जेक्टिविटी टा स्टार्ट करथिले। देखो ऑब्जेक्टिविटी तो अबे पूरा मु डिटेल रे कहबिनी, बट जस्ट जदि मु गोटे ब्रीफ रे कहबी, ऑब्जेक्टिविटी माने whatever research that you are doing or whatever social research or sociologist is conducting, that research will be independent of race, color, occupation, nationality, religion, moral preferences, political predisposition, etc. of the investigator. Okay, so objectivity achieve करिया को हेला, objectivity माने हेला जे तमे बा गोटे इन्वेस्टिगेटर निजर values को, निजर रेस रिलीजन जहाँ भी तार अच्छी पर्सनल इन्फ्लुएंस को साइड करिकी इन्वेस्टिगेशन करिवो, सेटा को कहते ऑब्जेक्टिविटी। बुझियाला। वैल्यू न्यूट्रलिटी माने कौन, वैल्यू न्यूट्रलिटी भी तुम कहो सर वैल्यू न्यूट्रलिटी, दिस टर्म इज पॉपुलराइज्ड बाय मैक्स वेबर। ठीक अछि, मैक्स वेबर हमर जो अछंती। हां, सो it's about avoiding your moral judgment, remaining unbiased, presenting facts without being influenced by own ethical and cultural belief. It's quite similar to objectivity. So हमें कहि परिबा हमको objectivity achieve करिया को हेले गोटे रिसर्च को कोन हमको ऑब्जेक्टिविटी अचीव करिया माने बायसनेस फ्री करिया को हेले वैल्यू न्यूट्रल होबा को पड़िबो। वैल्यू न्यूट्रल माने व्हाटएवर योर वैल्यूज आर यू हैव टू कट डाउन एवरीथिंग, ताहले ही ऑब्जेक्टिविटी अचीव हे परिबो। बुझी पारलो, नॉट अलाउइंग योर पर्सनल वैल्यूज और बायसेस अफेक्टिंग द सोशल रिसर्च प्रोसेस। ओके, so objectivity and value neutrality both sides of the same coin। ओके, सोशियोलॉजी को साइंटिफिक करिया पाई कि हमें पढ़ुଥିଲେ ना सोशियोलॉजी एज अ साइंस, मने अछि। तो सोशियोलॉजी को जो माने साइंस बोली धरुचंती बा सोशियोलॉजी को हमें साइंटिफिक वे रे स्टडी करिया को हेले ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी आर एसेंशियल। सो टू अचीव ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी is the first thing that you have to do। बुझेला, वैल्यू न्यूट्रलिटी माने you have to avoid your personal values। बुझी पालो समस्ते। नाउ कोन प्रॉब्लम अछि वैल्यू न्यूट्रलिटी रे, जदि हमें सोशियोलॉजी रे इफ यू want to bring in value neutrality, what are the problems that you are going to face? First जिंस वाला complete value neutrality is almost impossible। ओके, काहे की कहना प्रत्येक सोशियोलॉजिस्ट इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ही हैज सर्टेन वैल्यूज एंड बायसेस, ओके, which will definitely influence their choice of topic, research question, interpretation of data, सब जिंस को influence करिवो। ओके, तो सपोज आमे कहिबा जे जड़े सोशियोलॉजिस्ट कोन करछि ना गोटे एरिया रे देखिला गोटे somebody caused a crime। ओके, somebody caused a crime, तो सी तार बैकग्राउंड रिसर्च कला कौन बैकग्राउंड अच्छी पिलाटर एंड ही फाउंड कि ही इज अ पुअर। ओके, एंड ए दीटा जिंस सी ऑब्जर्व करके जजमेंट देला जे पोवर्टी जोगुरु पोवर्टी ब्रीड्स क्राइम। से लिखि देला। ओके, आउ गोटे सोशियोलॉजिस्ट आसिला, तो आउ गोटे सोशियोलॉजिस्ट आसिकी कौन होला ना देखिला जे सेम रिसर्च कला पुअर से सेम पर्सन ऊपर सी कला से भी पुअर अछि। ओके, बट आउ टिके से डीपली स्टडी करके जानिला जे से गरीब फैमिली रे जन्म होईची सत, बट बहुत भलो स्टूडेंट थिला। किछि दिन परे किछि खराब सांग मानक सहित मिसिकी से क्रिमिनल हे गला। सी रिसर्च सी तार स्टेटमेंट देला जे
your criminal or you can say कौन फ्रेंड सर्कल क्रिमिनल फ्रेंड सर्कल और आम कह जो खराब फ्रेंड सर्कल ब्रीड्स क्राइम तो ये दीटा जिनस वैल्यू डिफरेंट हो गला कि नहीं कुह पीयर ग्रुप जोटा भी कौच दीटा आगे डिफरेंट आसला कि नहीं तमे एबे बांग्लादेश रे जो हिंदू मानक ऊपर अटैक को नहीं देख जदि तमे जने गोटे कोर हिंदुत्ववादी पर्सन हेतिबो सपोज ताल तमे कोन कहइबो तमे कहइबो जे हिंदू मानक ऊपर बांग्लादेश रे अत्याचार होची बट तमे जदि बांग्लादेश रो जने कोर लिबरल थॉट रो पर्सन हेतिबो तो तमे सेठी मे बी डिफरेंटली आंसर करिवो जे नाइ नाइ बांग्लादेश रे तो लक्ष लक्ष कोटी कोटी हिंदू रहउछंती समस्त ऊपर तो अत्याचार होउनी जो पर्सन इस्लाम अगेंस्ट रे इस्लाम को अब्यूज करिछि सेई पर्सन को से माने मॉब लिंचिंग कले सो यार रिलीजियन सहित बा कौन पर्टिकुलर रिलीजियन सहित लिंक नाही तो एटा गोटे एज अ पर्सन ता माइंडसेट आउ तार कंडक्ट उपरे लोक मानकर एक्शन हेछि तो दीटा अगर स्टेटमेंट दीटा अलग है कि नहीं अरे बुझी पारछो कि नहीं Yes, सो sir. एठी जो हमें कहिले जे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा okay your personal bias can influence the interpretation of data too तमे जहा इंफॉर्मेशन पाइलो बांग्लादेश रे हिंदू मानक हत्या करा जाउची इंफॉर्मेशन पाइलो एंड तमर इफ यू आर अ कट्टर हिंदू ताहले तमे डेटा को डिफरेंट वे रे इंटरप्रेट कलो एंड इफ यू आर अ लिबरल पर्सन हु इज लिविंग इन बांग्लादेश जो माने रिपोर्टर्स अछंती जो माने इंटेलेक्चुअल्स अछंती तबे तांको इंटरव्यू देखो से माने को इंटरव्यू रे से माने कोन कहउचंती जे ए पर्सन टा हिंदू अच्छी बोली मरी नाही बा मूव लिंचिंग तार हेई नाही रादर दैट पर्सन अब्यूज्ड द इस्लामिक क्रेडेंशियल्स और इस्लामिक इथोस सो दैट इज व्हाई ही वाज लिंच्ड बुझी पालो तो योर पर्सनल वैल्यूज yes unknowingly enters into interpretation of data तमरो जो डेटा इंटरप्रेट करूछ सेथरे तम वैल्यू टा इन्फ्लुएंस करिवो ही करिवो की बुझी पारलो नहीं एनीबॉडी रश्मिता गेटिंग इट Yes, sir. एंड चरण विकास बुझुछ Yes, sir. Got it, sir. Got it. निखिल बुझुछ तो सो निखिल ना नीलेन तम ना कोन ओके तो ये आम बुझिले जे तमर जहाँ भी पर्सनल बायस रही तमर अपब्रिंगिंग केमिति तम आइडियोलॉजी कौन है that will definitely influence your data interpretation your judgment your choice of topic okay तापर ethical and moral dilemmas तो एमती भी अच्छी some topics such as discrimination poverty human rights violation etc involve ethical questions too it is difficult for sociologists to remain neutral when studying such sensitive issues तो ये ethical moral dilemmas ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତମେ ସପୋଜ କୁହ ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଇଏ ଭିତରେ ତମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଛି ପୁରା କୋର ଟ୍ରାଇବ ଉପରେ ହେଲା ତ ମେ ବି ତମେ ତାଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଛି ତମକୁ କୋର ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ଲାଇଫ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଛି जो माने कि सपोज करो आफ्रिका रे रहउचंती एबे भी जो माने कि न्यूड होई कि बुलुचंती ओके तो एज अ सोशियोलॉजिस्ट तमे जाई कि तांको भितरे रही कि स्टडी करिवाटा इज इट एथिकल इज इट एथिकल को Sir, it is not ethical, but तांको
विषय जानिबा पई we have to be immersed. That हाँ, is known as participant observation. yes, that is why we have mentioned this term called dilemma. हाँ कि नहीं? तमें जानिଛ it is unethical, but you are still engaging with them to understand their sexual life, how they are living, how their marriage is happening. Okay, ମାନେ a person is having how many partners, এই ସବୁ question ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ. Okay, so ଏଠି ethical and moral dilemma ଆସିଗଲା. Okay, and ଯୋଉଠି dilemma ଆସିଗଲାଣି तुमको this way or that way choose करियर अछि. And if you are, if I am asking Divya that you conduct that research, or I am leaving on to you whether you will conduct that research or not. Suppose तमे गोटे आंसर अछि तुम पाखरे yes, आ गोटे आंसर अछि no, and you chosen yes, ताहले एटी वैल्यू आसीला कि नाही को दिव्या? Yes, sir. एटी वैल्यू आसी होला ना एटी. तमे जदी if you are a sociologist ताहले तमे निश्चित स्टडी करिवो तांको ऊपर. हां कि नाही? And if you want to make your research more and more concrete, then you have to use participant observation technique, in which you will you'll be immersed with those persons, and you will want to study about their life. तो ये कौन होला, ये तुम वैल्यू आसीगला कि नहीं कुह, तुम ये बायसनेस आसीगला कि नहीं कुह, न्यूट्रालिटी रहिला कि? No, sir. सर ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଭେରିୟର ଏଲୁଇନ୍ ଆଉ ଘୁରେଙ୍କ ଭିତରେ ଡିବେଟ୍ ହିଁ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ନେଇକି ଜଣେ କହିଲେ କି ଆସିମିଲେସନ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ କି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରାହେଇକି ରଖାଯାଉ ବିକଜ ଭେରିୟର ଏଲୁଇନ୍ ସେ ଟ୍ରାଇବ୍ ଗର୍ଲକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଥିଲେ ଦୋ 7-8 years ଆଫ୍ଟର ସେ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା. So data point gala tapare amar achi kono na role of sociologist. So some argue that sociologists should take a stance on social issues using their research to advocate for social change. Okay, for example, critical theorists and feminist scholars challenge the idea of value neutrality, seeing it as a way to remain the status quo. बुझे तो बहुत लोक आर्ग्यू करती जे सोशियोलॉजिस्ट माने जदि तमे वैल्यू न्यूट्रल है कि स्टडी करिवो ताहले गोटे स्टेटस कोटा केबे चेंज हे परिबो नाही, बा जो गोटे प्रॉब्लम टा अछि सोशल प्रॉब्लम टा केबे चेंज हे परिबो नाही. फॉर एग्जांपल तमे जने फेमिनिस्ट अछ एंड तुमको कहला पेट्रियार्की विषय रे स्टडी करो, तुमको कहला यू आर अ फेमिनिस्ट एंड तमे गोटे पेट्रियार्की ऊपर जाई कि स्टडी करो गोटे हाउस होल्ड रे हला. As a feminist you are supposed to advocate for women's rights, and in the patriarchy system you know कि नहीं men sorry women are subordinated. Okay, तो तम रिसर्च टाकू एज अ फेमिनिस्ट तमे एमिति भाबरे पब्लिकेशन करिवो सो दैट वुमेन मानकर राइट्स ता बहुत अधिक एडवोकेसी तार हबो कि नहीं. सो एथिपाई कुहाइची जे तमे जदि केवल वैल्यू न्यूट्रल है कि देखिवो माने नाही एटा तो हस्बैंड कर डोमेन, एटा तो वाइफ रो डोमेन, एटी सबऑर्डिनेशन रो क्वेश्चन आसुनी, ताहले से प्रॉब्लम टा सॉल्व हबो कि? जो प्रॉब्लम टा जेंडर इनइक्वालिटी रो जो प्रॉब्लम टा अछि सेटा सॉल्व हबो कि? So you have to put your value, you have to raise the voice of women to protect their rights or to uplift their rights. बुझी पारलो कि नहीं? Yes, sir. देन एला बायस इन इंटरप्रिटेशन, एटा तो हमें पढ़िले एडी जे एडी पढ़ले ना इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रे बायसनेस आसी जाए. तमे आमे जेमते एडी ऑब्जेक्टिविटी रे पढ़िले जे सोशल कॉन्टेक्स्ट रे व्हाट माइट बी ट्रू इन वन सोसाइटी माइट बी एप्लीकेबल मे नॉट बी एप्लीकेबल इन अनदर. ओके, सो एटी बायसनेस इन इंटरप्रिटेशन भी आसी जीवो जे sociologist may interpret the same set of data in various ways depending upon their theoretical perspectives or depending upon the social context. तमे डिफरेंटली इंटरप्रेट करि परिबो सेम डेटा टा. बुझि परछो?
तो पर्टिकुलर डेटाटा को जेमती आमे कहले हिंदू कट्टर हिंदूटा हेले से कहबो जे हिंदू मानक ऊपर अत्याचार होची एंड इफ यू आर अ लिबरल पर्सन हु इज लिविंग इन बांग्लादेश यू विल इंटरप्रेट द डेटा कि नाइ इट वाज अ रिलीजियस अब्यूज जो जोगुरु कोन ये हला प्रॉब्लम टा हला बुझियला देन चॉइस ऑफ रिसर्च टॉपिक नाउ एथेर तो बेडा होची फर्स्ट स्टेप ओके सो सर्टेन the decision about what to study is also influenced by the researcher's interest which can be linked to personal values ठीक ଅଛି ତ ତମ ପାଖରେ suppose 10ଟା research problem ଅଛି okay so as a researcher you sometime tend to study on those social problems which get more attention because they align with the researcher's concern ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟିଏ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛ ତାହେଲେ ତମେ ମୋର ଅର୍ ଲେସ୍ ସବୁଆଡେ ଏଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ ଏନଗେଜ ହବ ଯୋଉଠି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି okay you will not probably research on those topics where Islam is in danger you will not dwell on those topics where Sikhs are in danger or Christians are in danger ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ମୋର ଅର୍ ଲେସ୍ ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା କରିବ ଯୋଉଡାକରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି ଆଇ ୟୁ ଗେଟିଂ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ यस सर ओके गुड सर एक्चुअली साइकोलॉजी रे गुटे एटा को माने कन्फर्मेशन बायसेस बोली की गुटे कुआ जाय बदे जे हाँ आमे जो विषय रे भाबु थाउ माने सेम जिंस को आमे माने जोडा जो सिचुएशन रहले भी से सेम जिंस ही आमे ऑब्जर्व करू सेति एग्जैक्टली तो तम माइंडसेट जहाँ थिबो तम वैल्यू सिस्टम जहाँ थिबो तमे जहाँ भी तमे देखिबो तुमको खाली सेया ही लागिबो इवन इफ तमे देखो आमे जो बांग्लादेश कथा कहले तो माने तेबे तो इंडिया पाकिस्तान रो भी तमे एनालिसिस करि परिबो तमे भाबो इंडिया रे जहाँ भी टिके टेरर एक्टिविटीज होची आमे सब बेले संगे संगे माने तमे किछि जानि भी नथिले भी प्रथम तम माइंड रे कोन आसुची एटा पाकिस्तान करथिबो हो कि नहीं बा टेररिस्ट माने आसी पाकिस्तान नु करिक जाइथिबे यस और नो यस सर ओके yes sir. सो Because जे past ରେ same thing जेमती led आमे to जो ଅଛି हम्म आमे जो माने टेररिस्ट को मुसलमान सहित लिंक करू माने मोस्ट ऑफ द केसेस रे सेमती एग्जैक्टली तो आमे मोस्ट ऑफ द केसेस कोन कहू ना टेररिस्ट कहला माने आमे संगे संगे भाबी दो तार एई भलिया निश्चय न थाई कि दाढ़ी मेचे थिबो एई पूरा चूड़दार पंजाबी पिंदी से बुलथुओ संगे संगे माइंड को आसी टेररिस्ट माने आखि बंद कर देले से भलिया गोटे फिगर आसी जाउ माइंड रे यस और नो Yes, sir. तापरे सोशियोलॉजिस्ट एज अ सोशल बीइंग तापरे अल्टीमेटली तमे देखिबो जो सोशियोलॉजिस्ट अछि जे रिसर्चर अछि तो सीए निजे भी तो गोटे सोशल बीइंग माने सीए समाज द्वारा गढ़ी तोली ହେଇଛି सीए हमर एई कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट रे तो बढ़ीछि तो सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीटली डिटैच oneself from the dominant ideology or societal values ହଁ କି ନାଇଁ सो तमे जो भी ଇଏ ରେ ବଢିଥିବ ତମେ ଗୋଟେ सोशियोलॉजिस्ट ବା रिसर्चर ତ अल्टीमेटली ଗୋଟେ सोसाइटी द्वारा गढ़ी तोली ହେଇଛି ना ओके तमे जदि भाव गोटे गाँ रे रहुଛ गोटे ट्रेडिशनल सोसाइटी रे रहुଛ ताहले अनकॉन्शियसली you will be also against the intercaste marriage yes or no जेमिति तमे वेस्टर्न सोसाइटी रे बा मॉडर्न सोसाइटी रे रहिले you have nothing called intercaste हाँ कि नहीं तमे तम फ्रेंड मान सहित मिसिला बेले कास्ट पचारिक मिसुछ कि बट ट्रेडिशनल सोसाइटी रे तमे जीवो सेठी सब कास्ट बेसिस रे गोटे गाँ डिवाइड कराइछि एटा होछि शासन साही ब्राह्मण साही एटा होछि अमुक साही एटा होछि अमुक साही अरे मार्क करछ कि नहीं Yes, sir. यस सर तो जदि तमे गाँ रे एई जिंसटा ट्रेडिशनल सोसाइटी रे मार्क करछ माने गोटे विलेज गोटे गाँ बट ता भितरे कास्ट बेसिस रे डिवीजन ହେଇछि साही सब ता माने अनकॉन्शियसली तमे जो रेगुलारली मिसुच खाउच बसुच तमे जानिछ तमे तमरी कास्ट रो लोक मान सहित मिसुच बसुच खाउच बट तमे you come to the modern societies
ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆଉ ସେଠି କିଛି କୌଣସି କାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରୁଛି କି ତମେ କୋଉ କାଷ୍ଟର କୋଉ ରିଲିଜନ କିଏ ଜାଣୁଛି? ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଆଉ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଏତେ ଆସୁନି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ତମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅ ରିସର୍ଚର ୟୁ ଆର୍ ଅ ରିସର୍ଚର ଫ୍ରମ୍ ୱିଚ୍ ଏଭର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତମେ ଯଦି ଟ୍ରାଡିସନାଲରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ କାଷ୍ଟକୁ ଇଏ କରିବ। ତମେ ଯଦି ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ଥିବ ୟୁ ଡେଫିନେଟଲି ଅପୋଜ ଦ୍ୟାଟ ସିଷ୍ଟମ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କାହିଁ କରାହଉଛି, ତମେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଡେଫିନେଟଲି ଭଏସ୍ ଅଗେinst ଇଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ influence on funding and sponsorship. Research funding can also influence the scope and focus of studies. Research funding. So institutions or sponsors may have expectations that align with specific ideologies or policy agendas, challenging the idea of value neutrality. तो ता माने होची कोन, जदि तमे भाव रिसर्च टा पेड रिसर्च जदि हला, पेड रिसर्च जदि हला ताहले कोन हबो ना डाटा इंटरप्रिटेशन टा भी पेड हे जिवो। यस और नो? डेटा इंटरप्रिटेशन टा भी पेड हे जिवो। जेमति हमें मीडिया कथा कहूची, किछि पेड मीडिया अछंती कि नाही, से माने पैसा Yes, पाई sir. कि कोनोसी भी जिंस को कोनोसी भी जिंस रे इंटरप्रेट करी कहउचंती। यस और नो? Yes. yes sir. Okay, good. Then research design and methodology. Obviously, the choice of research design and methodology also can introduce bias. For example, ମୁଁ just ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ତଳେ କହୁଥିଲି ଯେ କୋଉ ବି ତମେ ଆଫ୍ରିକାନ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମାନେ ନିଗ୍ରୋ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁଡ୍ ହେଇକି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ଲାଇଫ ଭିତରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଛି। ତ ଦିବ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭେସନ ୟୁଜ କରିବା। But there are numerous methods to study. Yes or no? Yes, sir. yes sir. तो एठी देखो बायसनेस आसीगला कि नहीं, by choosing the particular method or research design, बुझियला? So according to Alfred Kurtz, human beings have consciousness, so value neutrality is never possible. Okay, sociologists like Karl Marx, C. Wright Mills, etc., they have also argued that sociology should not be value neutral. Sociology रो काम ही नुहे value neutrality achieve करिवाटा। तो बुझी पारलो समस्ते प्रॉब्लम विथ वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी रहिले प्रॉब्लम कोन हो, जेति पॉइंट अछि आमे तो बहुत डिस्कशन कले, तम माने आहुरी यार नुवा नुवा एग्जांपल्स नै कि भाबो चारिआडे जहा चाली छी हमर सोसाइटी रे जहा चाली छी ताकू नै कि तमे एग्जांपल्स पुट करी कि भाबिले आहुरी क्लैरिटी आसी। एवरीबॉडी क्लियर? जो माने हमर अच्छा चरण एंड अदर्स? Yes, सोना sir. सोनाली बुझा पडुची? सोनाली Yes, sir. फास्ट रु अच्छा ना लेट रे जॉइन कलो क्लास? ନା ସାର୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ଅଛି। ओके ताले बुझुथु। एंड पूजा रानी नंद? Yes, sir. ओके गुड। एंड निशिता निर्मला यू ऑल आर गेटिंग ना? ओके ठीक। देन अच्छा, तो आमे देखिले जे प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिविटी रे भी किछि प्रॉब्लम रहछि एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी बोथ आर बोथ साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओके, सो सोशियोलॉजी रे आमे याको अचीव करिया बहुत डिफिकल्ट, बट इज इट इम्पॉसिबल? Complete value neutrality and complete objectivity is definitely impossible, but there are certain ways, certain strategies through which आमे जो एक्सट्रीम लेवल रो सब्जेक्टिविटी टा रहुची सेटा को आमे टिके मिनिमाइज करि परिबा बा किछि मात्रा रे आमे ऑब्जेक्टिविटी अचीव करि परिबा। कोन कोन व्हाट आर द स्ट्रेटजीज? फर्स्ट हला रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी मीन्स so researchers are encouraged to engage in reflexivity, that is acknowledging their biases, perspectives and potential influence on the research. This does not eliminate bias but makes it transparent. माने फर्स्ट जिनस होला जे you need to understand introspect, you need to introspect, yes self internalization। तमे फर्स्ट निजे जानिया दरकार तो तमरो पर्सपेक्टिव कोन,
what are your value system. ओके ताहले कौन हबो तमे डेफिनेटली किछि मात्रा रे बायसनेस टाकू कमै परिबो बुझियला तो सो फर्स्ट जिंस होला रिफ्लेक्सिविटी दैट इज सेल्फ माने कोन यू अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ फर्स्ट ओके तो नेचुरली तम माइंड रे रिसर्च कला बेले सब बेले आसीबो जे अरे मु एटा मु माइंड तो मु तो गोटे इंटरकास्ट बैकग्राउंड रो आसु सर सपोज तमे बैक स्टडी करछो मैरिज विषय रे एंड तमे ट्रेडिशनल सोसाइटी रो आसीछो तो तमे बारंबार क्वेश्चन निजु पचारिबारे मु गोटे शासन ब्राह्मण साही रे जन्म होईची आ सब बेले सेम कास्ट रो व्यक्ति मान सहित मिसिची तो मु सेही जिंस आनी दउनी तो मो रिसर्च रे ओके सो इट विल मेक द थिंग्स ट्रांसपेरेंट तापर हला सेकंड मेथड कोन यूज करि परिबो ट्रायंगुलेशन माने using multiple methods perspectives and sources of data that can validate findings and minimize the biases. It's a strategy that uses multiple approaches to a research question to increase the validity and credibility of the findings. ता माने कोन जेमिति दिव्या एबे कहउतिले जे निग्रो ट्राइब्स को लाइफस्टाइल को स्टडी करिया को हेले तुमको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड्स फॉलो करियाटा बेटर तमे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फॉलो करिकी यू फाउंड समथिंग यू यूज्ड अनदर मेथड सपोज आमे कहबा केस स्टडी तमे यूज कलो केस स्टडी मेथड यूज कलो अच्छा ए मेथड गुडा को बाय द वे हमें यूनिट 3 रे पढिबा हला सपोज तमे केस स्टडी मेथड यूज कलो एंड स्टिल यू गॉट द सेम रेस्पॉन्स सपोज करो you got another thing suppose तमे आउ कोन ऑब्जर्व आउ को मेथड यूज करबा को Sir, if they are able to communicate with us, then we can take a interview, structure, सपोज non-structure, इंटरव्यू semi-structure. मेथड यूज करो Yes, एंड sir. इंटरव्यू मेथड किबा क्वेश्चनर जो भीतर भी पुणी अगेन यू फाउंड द सेम रिजल्ट तो मल्टीपल मेथड रे यू आर इफ यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट ताहाले भी तमे जानो जे तमरो जो रिसर्च ता हेची दैट इज मोर और लेस ऑब्जेक्टिव मोर और लेस वैलिड बुझिला सेठी बायसनेस कम रहिछि कारण तीन चारटा मेथड रे भी सेम रिजल्ट आसुछि ता माने कोन बुझि पालो ना समझते Yes, sir. Sir, peer review भी करी होबो. For example, हमें देखिबा कि आगुर को researcher ता ऊपर literature work करिसंती कि त जदि यस सेटा भी हम क्रॉस चेक करि परिबो. यस सो नेक्स्ट हमर अछि पीयर रिव्यू एंड रेप्लिकेशन जोठी की यू हैव टू इन्वॉल्व द अदर स्कॉलर्स माने तम सांग साथी रिसर्चर माने को बदे इन्वॉल्व करे दो ओके एंड यू विल एनकरेज द रेप्लिकेशन ऑफ स्टडीज माने तमे देखिबो जे तमरो स्टडी तमरो रिसर्च जहा बाहरची सपोज हमें कहबे निखिल रो रिसर्च जहा बाहरची हमरो हमें कहबा विकास करो सेम आसुची कि नाही विकास कर सेम आसुची दुर्योधन कर सेम आसुची ना जति तीन जन कर सेम आसुची ताले सेठी इंडिविजुअल बायस कम हैला कि नाही Obviously, sir. हैला देन आसिला कोन ना एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर नेक्स्ट होची कोन ना रिसर्चर शुड क्लियरली डिस्क्लोज देयर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क assumption methodological choices allowing readers to understand the perspectives guiding the research तापरे तमे कोन करिवो तमे जो मेथड यूज करिछो जो assumption नेइछो जहा भी सब फ्रेमवर्क यूज करिछो ताकू ओपन करिवो बुझि पालो ताहाले मध्य समस्ते क्लियरली तमर माने एटा तमर जणा पडिवो जे वेदर यू हैव इन्वॉल्वड सम ऑफ योर वैल्यूज और नॉट और तमे सपोज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज करिछो तो somebody else जेमति आ गोटे मेथड यूज करिकि तमे जानि परिबे जे नाही तम मेथड रे जहा बाहरची ता मेथड रे भी सेया बाहरची सो एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर तमे किछि लुचेइबन बुझि पारछो रिसर्च को पूरा ओपन करिवो पब्लिक ताहाले मध्य आमे कहि परिबा सेठी बायसनेस कमी जीवो टिके बुझियला तापर फाइनली पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्विंग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इन रिसर्च प्रोसेस okay that can ensure diverse viewpoints which will definitely reduce the researchers bias माने तम रिसर्चर रे बहुत सारा ये मान अदर रिसर्चर
ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କୁ ବି କନସିଡର କରିବ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପଏଣ୍ଟରେ ତମ ନିଜର ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଆଡ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଟିକେ କମିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ନା କଣ ଡାଉଟ Yes, ରହିଲା sir. ହୁଁ କିଏ ନ ବୁଝି ପାରିଲ what are the strategies to achieve objectivity and value neutrality ବୁଝିଗଲା ତ ସମସ୍ତେ yes or no Yes. Yes, sir. okay ঠিক ଅଛି ତ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ବି ଏଠି ଦେଇଛି ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ବି ବୁଝି ପାରୁଥିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲେସନ ଡାଇଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମାନେ କଣ ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ମେଥଡ ୟୁଜ କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ରିସର୍ଚର ୟୁଜ କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡେଟା ସେଟ ୟୁଜ କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଥିଓରିଜ ୟୁଜ କର ଯଦି ତମେ ସେମ ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଛ ତାହେଲେ ତମର ତମେ ମୋର ଅର ଲେସ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ବି ତମେ କରିପାରିବ ଏକ୍ସାମ ରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିବ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲେସନ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏଟା 2 3 4 ତ ଆମେ କହିବା while objectivity and value neutrality are important goals complete detachment in social research is challenging due to subjective nature of social reality the complexity of human behavior and the researcher's own positionality so rather than striving for absolute objectivity, many social scientists advocate for transparency, reflexivity, and methodological rigor to ensure research credibility and validity. So ଆମେ complete objectivity ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ନାହିଁ it is never possible rather ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ method ଗୁଡାକ use କରିବା to make our research credible ବୁଝିଗଲା ବେଶୀ biased ହେଇ ନ ଯାଉ ओके कम्प्लीटली भूल न हो जाऊ रिसर्चटा आम रिसर्चर क्रेडिबिलिटी रहू रिसर्चटा वैलिडिटी वैलिड हो एंड हाउ इट कैन बी वैलिड एंड क्रेडिबल by using the above methods ओके এই মেথড यूज কলে आम रिसर्च बायस कंप्लीटली बायस भी हबनी आउ क्रेडिबल भी हबो वैलिड भी हबो बुझियला ओके देन जीवा नेक्स्ट टॉपिक होची इश्यू ऑफ मेजरमेंट इन सोशल साइंस सेम जिंस सोशल साइंस बा सोशियोलॉजी को मेजरमेंट जो अच्छी ओके तो ताको हमें मेजर करिया पे व्हाट आर द इश्यूज आर देयर ओके हमें कोन कारण हमें सबले कहूछ ना सोशियोलॉजी इज आल्सो साइंस तो साइंस माने कोन साइंस रे मेजरमेंट अच्छी तमे मैथमेटिक्स कथा कुओ तमे इकोनॉमिक्स कथा कुओ माने मेजरमेंट माने गोटे डेटा सेट माने गोटे कौन थियोरी फॉर्मूला देकी से सब साइंस माने थियोरी फॉर्मूला देकी सब जिंस पढ़ा जाए ओके नहीं तमे हेल्थ कथा को हेल्थ जो हमर अछि सेतिर भी देखो ब्लड प्रेशर तमरो डायबिटीज ए सब जिंस रहिछि तो दोज आर आल्सो फॉर्मूलास सेतिर भी हम मेजरमेंट करूचंती तमे वेदर सिस्टम ज्योग्राफी कथा को भाबो सेठी टेम्परेचर अछि ये अछि बहुत जिंस अछि सो सोशल साइंस रे कौन कौन प्रॉब्लम्स रही इन दोज मेजरमेंट्स ओके व्हाइल द लैटर माने तमरो जो नेचुरल साइंस गुडा रहिला माने जो हमें जो कहले इकोनॉमिक्स हे गला ज्योग्राफी हे गला एगुडा को these deal with tangible and quantifiable variables ओके तो tangible quantifiable माने कोन तो देखो पानी पानी को मेजर करि परिबो तमे कुह एयर रे पोल्यूशन केते अछि ताकू मेजर करि परिबो तमे कहबो एठी केते कोन जर्म्स अछि तमे ताकू मेजर करि परिबो तमे हार्ट रेट को मेजर करि परिबो तमे ब्लड प्रेशर को मेजर करि परिबो तमे कोनोसे ओटा हाइट डिस्टेंस को मेजर करि परिबो बट सोशियोलॉजी डील्स विथ एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट माने कोन attitude belief social behavior love hate which are never measurable एडा को मेजर करी होबो नै केबे बुझियाला तो जनक एटीट्यूड टा केमति मेजर करिवो जनक लव को केमति मेजर करिवो सो व्हाट आर द की इश्यूज ताले कोन कोन रहिला मेजरमेंट रो सोशल साइंस रे फर्स्ट हला डिफाइनिंग दोस एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट्स ओके
So social scientists must first clearly define the concept they intend to measure. For instance, happiness. Happiness can be interpreted differently across cultures and individuals. अरे ତମ ପାଇଁ happiness may be ଅଲଗା ହେଇପାରେ, XYZ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ବୁଝିଲା? So ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଡେଫିନେସନ ହିଁ କରିହବନି, and definition ଯଦି ବା define କରିଦେଲ ସେଇଟା ବି similar ହବନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। Then operationalization. Once a concept is defined, it must be translated into measurable indicators. This involves specifying how the concept will be observed and recorded. Okay, तो जदि भी define करदेलो तापर ताकू measurable indicators रे ताकू translate करिया पड़िबो, देखि पारिया दरकार तमे ताकू। ओके, जणे जदि हसुनी ता माने कोन से खुशी नाही, मते कहलो। जणे हसुनी दांत देखैकी ता माने is or her कौन he or she is not happy, मते कुआ। Yes, sir, and vice versa also. If Yes, someone is laughing, ता doesn't माने mean नुह जे सिए sad or happy. yes, बुझिला। सर ସେଇଟା ହିଁ ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ ଦେଖିଥିବା କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଆକ୍ଟର୍ସ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ 2-3 ଡେଜ୍ ଥିବ ବଟ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିହେଭ୍ କରୁଥିବେ। बिहेव करथिबे कारण जेकर माने खाली गोटे माने तांको मुहर देखि तमको लागुथो बहुत बढ़िया ता माइंड टा अछि। ओके, देन reliability and validity. This refers to the consistency of reliability. Reliability माने कोन? Consistency of a measure. A reliable measure produces similar results across time, setting and research. Okay, and validity माने कोन? Accuracy of a measure. A valid measure actually measures what it is intended to measure. So social science रे reliability और validity achieve करिया बहुत difficult. तो मु कोन कहली reliability माने कोन? Consistency of a measure. माने तमे जहा रिसर्च करूथबो जेते बेले भी से रिसर्च करे सेम आंसर बाहरी, बुझि पालो? एटा सोसाइटी रे संभव की? No, sir. Is every No, sir. Muslim a terrorist? No, sir. तो एटी कंसिस्टेंसी आसुची कि सोसाइटी रे? आसीबनी ना। तापर वैलिडिटी, वैलिडिटी माने एक्यूरेसी ऑफ ए मेजर। ओके, माने गोटे रिसर्च रे तमे जहा अचीव करिया को चाहूतबो सेया ही अचीव माने सेया ही से मेजर करिवो। देखो जेमिति हमरो साइंटिफिक एलिमेंट्स अच्छी बा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अच्छी ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर मापिया पई कि ता पई गोटे स्पेसिफिक मशीन अच्छी, से खाली ब्लड प्रेशर मापिबो, से माने तमरो हार्ट रेट मापिबोनी, से केवल ब्लड प्रेशर मापिबो। बट सोशियोलॉजी रे एमती किछि इंस्ट्रूमेंट अच्छी कि जोटा जहा चाहूची तमे सेया मेजर करि परिबो, अच्छी कि सेमती किछि? No, sir. सो इट आसी पारलानी। तापर सब्जेक्टिविटी एंड बायस, रिसर्चर बायस, सो एटा तमे पढिले एबे जस्ट आगुरु टिके। So researcher personal belief, value, those can definitely influence the data collection, interpretation. Participant bias, participant bias भी अच्छी कौन ना? participant may provide socially desirable answer or misrepresent their true feelings. तमे सपोज जने ट्रेडिशनल सोसाइटी रे अच्छा माने तमे जनरल देखिबो जो माने इंटरकास्ट मैरिज करंती, ओके, तांको बापा मां माने तांको घरे पिला मानकु जाबतीय कथा कहिथिबे, से पुओटार छोटो कास्ट बा से झियोटार छोटो कास्ट ये से एगुला कहिथिबे। बट सोसाइटी आगे कहिबे नाइ नाइ आमे तो सोसाइटी रे आमे तो से इंटरकास्ट को एडा किए पचारुते से कास्ट पास्ट, वी आर वेल अबव द कास्ट एंड आमे वी आर सो हैप्पी, तांको फ्रेंड सर्कल रे कहिबे। स्पेसिफिकली एलिट बैकग्राउंड रे एडा सब होउची। अरे मार्क करछ कि नाही? बट प्राइवेट फोरम रे से माने कोन करिवे? they will speak their heart out. एडा मार्क करछ कि नाही समस्ते? Yes, Yes, sir. sir. Even though examination रे भलो परफॉर्म न कले इंडिविजुअल
चाइल्ड को पूरा सुनै थिबे बट हाँ सोसाइटी रे कहबे कि नो सोसाइटी रे वी कहबा सपोर्ट यस आवर। एटा इट्स हाँ जस्ट एन एग्जाम आ एमती केते एग्जाम आसीओ लाइफ हाँ पीस ऑफ पेपर नथिंग टू वरी अबाउट। एग्जैक्टली ओके सो देन कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स एटा भी हमें आगु पढ़िले फास्ट है कल्चरल डिफरेंस तो तुम जो कल्चर रे बढ़ीच जो कल्चर तुम से हिसाब रे सोशलाइज हेइच तुम रिसर्च भी से हिसाब रे तुम इंटरप्रेट करिवो तुम डेटा गुडा को तुम से हिसाब रे इंटरप्रेट करिवो ओके जदि तुम एभलिया गोटे कल्चर रे बढ़ीच जोठी पिला दिनरू तुम देखिच जे कौन सेम कास्ट रे मैरिज हुए तो इंटरकास्ट मैरिज टाକୁ तुम गोटे पाप बोली धरि नब सिमिलरली कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस जेमते हमें कहले सोसाइटी रे कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट रिसर्च गुडा डिफरेंट हे जिवो ओके तमे गोटे रिसर्च टा एक्स कंटेक्स्ट रे जहा आसी वाई कंटेक्स्ट रे से आसीबो नाही केबे ओके बुझी पारना एटा ए पॉइंट आगु हम डिस्कशन करिसन ना उथरे बुझेबी रो सर बुझी हेइ छी त ठीक अछि देन अच्छा एठी भी इश्यूज तो रही बट देयर आर सर्टन वेज जोटी कि आमे किछि चैलेंज गुडा को किछि मात्रा रे एड्रेस करि परिबा जेमति जहां हमें ऊपर पढिछ सेमति फास्ट है ट्रायंगुलेशन मेथड यूज करिवो मल्टीपल मेथड यूज करो ओके टू द सेम फेनोमेनन एंड यू देन गेट द रिजल्ट कि जदि केते मात्रा रे रिजल्ट गुडा सिमिलर आसु जदि सिमिलर आसु जी तमे जानिबो जे नाइ डेटाटा किछि मात्रा रे वैलिड अछि पायलट टेस्टिंग करेबो conducting a small scale studies to refine measurement instrument माने तुम गोटे बड़ मेजरमेंट कौन सी गोटे टॉपिक ऊपर करबा आगु आग गोटे छोट जगह को लेकिन टॉपिक माने गोटे छोट एरिया रे तमे ये करियो माने फॉर एग्जांपल तमे सपोज चाइल्ड लेबर पूरा ऑल इंडिया रो चाइल्ड लेबर ऊपर तमे स्टडी करिया चाहूछ तो तमे चाइल्ड लेबर ता पई स्टडी करबा आगु तमे आग तम घर पाखे गोटे जो बरा दुकान अछि से बरा दुकान में जो छोट पिलाटा बसिकी चा कप धोउची आग ता ऊपर रिसर्च कर पायलट टेस्टिंग कर तापर तुम चाइल्ड लेबर ऑल इंडिया लेवल रिसर्च करिवो बुझी पारलो ना जो हमें कहले स्मॉल स्केल स्टडीज करो तापर इंटर रेटर रिलायबिलिटी assessing the consistency of ratings or judgments made by multiple observers इंटर रेटर माने तमे आग जजमेंट करो तमे रिसर्च करो आउ जने रिसर्च करो देन यू see how much both researches are consistent रिसर्च कंसिस्टेंट अछि ना वेरी करूची बुझिला then statistical analysis using statistical methods to analyze data and assess the reliability किछि किछि statistical method यूज करियो पड़िवो ओके जेमति कि हमें कहिबा जेमति हमें यूज करूचे कोन पोवर्टी ओके पोवर्टी हमें जब पोवर्टी स्टडी करूचंदी हमें गोटे सर्टन रखुचंदी ना बीपीएल एपीएल अछि कि नै कांसेप्ट गोटे पर्टिकुलर वर्ल्ड बैंक भी डिफाइन करूची पर्टिकुलर अमाउंट जो तुम इनकम करूनो ताल तमे ताटू कम हेले तमे पुअर अधिका हेले तमे यू आर नॉट अ पुअर अछि कि नै Yes. तो तमे गोटे सेही डाटा बेस को ये करिकी तमे गां रे बा लो तमे जो मिडिल इनकम कंट्रीज हाँ तमे गोटे पर्टिकुलर एरिया रे तमे सेही डाटा बेस को देखि मेजर करछो हाउ मेनी ऑफ दीस आर लिविंग बिलो दिस डाटा तो से माने बे पुअर बुझिला तो स्टैटिस्टिकल भी तुम यूज कर परिबो एंड फाइनली रिफ्लेक्सिविटी दैट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड योर ओन बायस assumption इन योर ओन प्रेफरेंसेस ताहले तमे कोन होबो ना रिसर्च टाको ठीक भाबरे करिवो ओके सो बाय केयरफुली कंसीडरिंग these issues employing appropriate measurement techniques social scientists can strive to produce reliable and valid research बुझियला तो देन हमर नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड में जो साइंटिफिक मेथड पढुचे बा जो साइंस हमें स्टडी करूचे व्हाट आर द एलिमेंट्स माने तार फीचर्स कोन कोन अछि गोटे साइंस रो देन कॉन्सेप्ट थ्योरी फैक्ट कोन तांको भीतर इंटर रिलेशन कोन ठीक अछि हाइपोथेसिस इज देयर हाइपोथेसिस कोन
What are the importance of hypothesis? Then function of hypothesis. Hypothesis ର function କ'ଣ? Research design, content analysis ଅଛି, then ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଠି end ହଉଛି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ next class ରେ ପଢିବା ଆମର element of scientific method, but I would like to tell you कि please element of scientific method ଟା ନିଜେ ପଢିବ ହେଲା। discussion ଆମେ କରିବା but ଏଟାକୁ ନିଜେ ପଢି ଦେଇଥିବ ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ବହୁତ ହି ଇଜି ଜିନିଷଟା, ଠିକ ଅଛି। ओके, तो समस्ते बुझी पारुछ ना कौन डाउट रहुची क्लास रे? ओके गुड। अच्छा ठीक अछि, जो माने नुआ अछ, नुआ न्यू फर्स्ट टाइम पे सोशियोलॉजी पढुछ, जेमति सोनाली सो फर्स्ट टाइम पे पढुछंती, आउ के फर्स्ट टाइम पे पढुछ कि हैंड रेस कलो? फर्स्ट टाइम पे सोशियोलॉजी जस्ट फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट करूछ नुआ नुआ। निर्मला, चरण, छायाश्री, ओके बुझा पडुची? Yes, sir. Yes, sir. निशिता इज आल्सो। Yes, sir. ठीक अछि, गुड। देखो सोशियोलॉजी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ओके, मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट in sociology। you have to, nothing is there to remember, तमे आंसर बुझी जाओ, ए नोट्स को चिरी फोपाड़ी देले भी किसी आवश्यकता नाही नोट्स रो, जे तमे बुझी जाइछो जिंस गुडा। ओके, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट टू राइट। ओके, घोषिया पई किछि नाही एतरे, गोटे कांसेप्ट बुझी गलो, सिंपली तमे कोन करिवो ना, तम सोसाइटी आखि बंद करिकी खाली अध घंटा घंटाटे भाव सोसाइटी विषय कौन चली सोसाइटी रे, एंड जस्ट लिंक इट विथ योर सिलेबस। मो सिलेबस रो को पार्ट रे मैं ऐड करि परिबी, को पार्ट रे एटा मेंशन हेई परिबो। ओके, मोस्ट एन्जॉयबल सब्जेक्ट। ओके, कार किछि कोन कहियार अछि? गुड। ओके, किछि नाही, एतरे किछि घुसिया पई नाही, किछि नाही, जस्ट तम सोसाइटी चारि पाखरे अना कोन चलीछि, कोन बांग्लादेश रे इश्यू चलछि बा हमर इंडिया रे इश्यू चलछि बा कोन तम चारि न्यूज पेपर हो बा करंट अफेयर तो पढुथबो ना, जस्ट लिंक इट विथ आवर सोशियोलॉजी सिलेबस। याकु मु को पार्ट रे, हां सर मैक्रो लेवल ले न है कि जदि हम फैमिली रे भी ऑब्जर्व करबा देखि हां परिबा कि हां जेंडर इश्यू, पैट्रियार्की, एग्जैक्टली। लाइक बहुत सारा जिंस। तमे निज फैमिली रे भी ऑब्जर्व करि परिबो जे कोन माने हम घरे को भले सिस्टम चलीछि। ओके, तो जेमति आमे जस्ट एबे जस्ट डिस्कशन कोन गले, दिव्या गोटे बढ़िया पॉइंट कहले जे मे बी तुमको तुम बापा माँ कहते मार्क मार्क खराब हेले जे कहीं खराब कलु, मो ना बुड़े देलु, ये हेलु से हेलु, बट बाहर गले ना ठीक अच्छे, इट्स ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम, ठीक अच्छे, खराब हो गला, ये हला से इट्स ओके। तो एटा सोशियोलॉजी रो गोटे देखो आमे एठी ए जो इश्यू ऑफ मेजरमेंट रे कोडी आमे पढुतले, हां एटा पार्टिसिपेंट बायस रे, पार्टिसिपेंट बायस रे बढ़िया एग्जांपल एटा। ओके, सो दैट्स हाउ जो तुम निज सोसाइटी रे चारिपटे कौन होइछ तुम ऑब्जर्व करिवो, ताले डेफिनेटली तमरो दीटा जिंस इंप्रूव हिजिवो। गोटे जिंस होला क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग, सेटा बहुत इंप्रूवमेंट हिजिवो। ओके, सेकंड जिंस होला एग्जांपल्स टा, जो हमरो सोशियोलॉजी रे गोटे जिंस अछि जे अनलेस यू जस्टिफाई योर आर्गुमेंट,
योर आंसर इज हाफ हार्टेड सो सेटा भी इंप्रूवमेंट हे जिवो तमर शॉर्ट किन तम माइंड को गोटे एग्जांपल पळे आसीबो बट सेटा एग्जाम रे हठात आसीबोनी जो तमे एबेठू जेबे तमे स्टार्ट करूछो सोशियोलॉजी पढिबा सेबेठाରୁ जो तम सोसाइटी को बुझिबो जानिबो चिन्हिबो ता विषय एनालिसिस टे करिवो ताको भाबिकी सिलेबस सहित लिंक करिवो को पार्ट रे ऐड हे परिवो को पार्ट रे ओके सिलेबस तो एते एक्सटेंसिवली मेंशन होई छी 24 टा यूनिट अछि एते सारा कीवर्ड्स लिखा हे छी बस सिलेबस को माने सिलेबस एपन प्रिंट काढी न के अच्छो कि सिलेबस एपन प्रिंट काढी न एनीवन सिलेबस को प्रिंट करिकी सिंपल तार यूनिट गुडा पढ़ कौन कौन मेंशन अच्छी प्रति यूनिट रे कौन कौन लिखा है ओके कौन ये जेंडर इश्यूज यूनिट रे कौन अच्छी फैमिली इश्यू फैमिली यूनिट रे कौन अच्छी सोशल मोबिलिटी यूनिट रे कौन अच्छी ओके जस्ट गो थ्रू इट प्रतिदिन असंख्य जिनस होची हम सोसाइटी रे जोटा कि तमरो को ना को यूनिट रो को ना को टॉपिक सहित लिंक हे जाउची and that's what you need to do that's what I am speaking just तमे लिंक करो किछि लेखा लेखी करे दरकार नहीं किछि नहीं just तमे एनालिसिस करो ऑटोमेटिकल थिंग्स विल डेवलप ओके आ जदि तमे 22 वर्ष आल्सो जो तमे सेटा न करिवो एंड तमे भाबिबो जे मु घोसी की लिखि देबी आंसर you will fail miserably let me tell you जदि मु जोटा कहूची तमे न करिवो मु जोटा कहूची कले यू सोशियोलॉजी इज केक वॉक आ न करिवो माने 7 जन्म रे भी सोशियोलॉजी रे आंसर भलो लिखि परिबोनी कि केबे एग्जाम रे भलो होबोनी ओके तो सेति पय कि एबे ठारू एनालिसिस करिया स्टार्ट करो सोसाइटी को देखि बुझ कोन चलची हम सोसाइटी रे हम घरे कोन चलची हम घरे कोन चलची मो बापा माने ही इज द ब्रेड विनर ऑफ माय फैमिली माय मदर इज द होम मेकर ऑफ माय फैमिली तो एठी कोन आसीला दिस इज अ कोर एलिमेंट ऑफ कोन पेट्रियार्कल Person's instrumental work and expressive work. एक्स इंस्ट्रूमेंटल वर्ड एंड एक्सप्रेसिव वर्ड तालकोड पर्सन कहइछथि ओके इट जस्ट एग्जांपल तमे भाबी देला आउ तुमको पर्सन पढिया दरकार नहीं ओके एठी तमे जानि पारलो ओके तमे एठी डिवीजन ऑफ लेबर जानि परिबो घरे लेबर डिवीजन ऑफ लेबर अछि बापा गोटे काम करूछन्ती माँ गोटे काम करूछन्ती जेमा गोटे काम करूछन्ती डिवीजन ऑफ लेबर आसीगला एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज इंटीग्रेटिंग माय फैमिली दैट्स व्हाट दरकाइम हैज टोल्ड कि Yes, sir. डिवीजन ऑफ लेबर Functional interdependence. यस फंक्शनल इंटरडिपेंडेंसी रु गोटे सोसाइटी बांधी हेकि रहे तम घरे फंक्शनल इंटरडिपेंडेंसी अछि बापा गोटे काम कले माँ गोटे काम कले मांकर किछि काम बापा कर दउछन्ती मांकर पैसा दरकार अछि बापा जेटा अर्न करिक आनिले बापांकर खाइबा दरकार अछि माँ खाइबा तयारी करिक देले छोट छुआंकर गप्प शुनियार अछि जेजेबापा जेजेमा गप्प शुनिया पे अछन्ती ओके तम भाई भौणी भितर खेलिबार अछि परस्पर भितर तमे सांग होई खेलुछ that's what the interdependency we are talking about and that's how your family is concrete your family is integrated prosperous Yes, sir. The family, marriage, kinship, primary socialization, and exactly so on and so तो forth. केते जिंस अछि तो हम निज फैमिली को स्टडी करिया स्टार्ट करो निज स्कूल को स्टडी करिया स्टार्ट करो कॉलेज को स्टडी करिया स्टार्ट करो फ्रेंड सर्कल को स्टडी करिया स्टार्ट करो आउ जस्ट लिंक इट विथ आवर सिलेबस ओके हां निशिता को किछि कहइबो कि निशिता हैंड रेस करूछ ना नहीं जी भी हैंड रेस करूछ कुह जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक अप सर आ गोटे छोट एग्जांपल मोर मन पड़छि बस कहि देबी आ किछि कहिबेनी हां कुह सर आई एंड मी और ऑफ मीड बोधे एटा मीड कर थिला बस एबे हम क्लास रे अछंती ऑब्वियसली मु जेमती एबे कथा होउची तो घर लोक सहित तो सेमती हो नथिबे एबे रेस्पेक्टफुली कथा होउची तो सेटा दिस इज मी वर्जन ऑफ माय सेल्फ एंड दैट इज आई वर्जन ऑफ माय सेल्फ व्हेन आई एम अलोन isn't it तो एथिरे भी सोसाइटी रा गोटे पर्टिकुलर चैप्टर लिंक हे गला एग्जैक्टली ओके सो एटा
तुमको जस्ट इंट्रोस्पेक्ट करियर अछि तुम जो सोसाइटी रहउछ ताको एनालिसिस करो लिंक करो सिलेबस सहित सोशियोलॉजी इज वेरी इजी ओके बहुत ओके, इजी एटा को जो लुकिंग ग्लास सेल्फ कहंती बोधे। yes नाइ ch कोलन करा एटा I and me टा अलगा नाइ लुकिंग ग्लास सेल्फ इज डिफरेंट ओके तो पढ़िबा हम आगु गले पर्सनालिटी जो हमर अछि पर्सनालिटी गोटे टॉपिक अछि सोशलाइजेशन एंड पर्सनालिटी तो दिव्या मने अछि yes sir मन ओके अछि जेमते कि फॉर एग्जांपल मते मो फ्रेंड्स केमिति देखुचंती फॉर हम्म एग्जांपल सर गोटे एग्जांपल थिले ना गर्लफ्रेंड केमिति देखुची वाइफ एक्स सब आज्ञा केमिति देखुचंती हाँ तो सेटा समस्तଙ୍କ व्यू रे हमें केमिति देखा जाउछन हमर लुक पर्सनालिटी एवरीथिंग डिफर्स ओके तो आमे पढ़िबा से गुडा ओके जति जति आमे पढ़ी गलेनी एबे तो ठीक अछि एबे जो माने नुआ अछ मे बी बहुत भलो एते अंडरस्टैंडिंग आसी नथिबो धीरे धीरे आमे जिबा पढ़िबा जेतेबेले तमे 5टा 6टा यूनिट हमर सरी जिवो ओके आउरी बहुत क्लैरिटी आसीबो ओके जति मु कहूची ताको आमे रिलीजियसली फॉलो करो ओके एंड ट्रस्ट मी वी विल सेल थ्रू वेरी इजीली ओके ठीक अछि सर मोर गोटे क्वेश्चन अछि सर, हाँ कुह माने टिके डाउट थिला जे जो आमे पढिलो आई थिंक 5 नंबर पॉइंट बोले जो वैल्यू न्यूट्रलिटी अचीव करबा पई जोथिरे कि आपण कहले जो पार्टिसिपेटरी मेथड ना कोन गोटे तो एक्चुअली सेटा टिके अलगा लागुଛି मते ताको टिके आउथरे कहि पारे कि काहे ना जो सोशली डिजायरेबल जदि आंसर देई पारे जो पार्टिसिपेटरी मेथड रे ताले ताको हम वैल्यू न्यूट्रलिटी रे केमति नै पारियो। हाँ से कथाटा पा कहूची कोटा कथा कहला वैल्यू न्यूट्रलिटी रो हाँ तो जो वैल्यू न्यूट्रलिटी अचीव करबा पई जो स्टेप हाँ गुड़ाक थिला हाँ हाँ लास्ट वाला जो पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट एटा हाँ सेठी कौन होची सर माने एटा माने केमति हेई पारियो वैल्यू न्यूट्रलिटी अचीव करबा पई नाଇଁ गुटे ନାଇଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ पॉइंट। ଏଠି କଣ କୁହା ହେଇଛି ବୁଝ ଏଠି କୁହା ହଉଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଓକେ ଓକେ ଛାଡ଼ ହଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଆମକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଲ୍ଟିପଲ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ୍ କୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଡାଇଭର୍ସ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲେ ଆମର ରିସର୍ଚରଟା ବାୟସ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବ जो सपोज तमे ଭାବ ତମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛ ଯେ ଗୋଟେ पर्टिकुलर एरिया रे टेररिस्ट एक्टिविटी ହେଇଛି एंड यू रिसर्च एंड तमे सपोज गोटे कट्टर हिंदू तमे तो तुम कहलो सर प्रत्येक टी मुसलमान व्यक्ति गोटे टेररिस्ट यू पुट अप स्टेटमेंट तापर आउ जणे रिसर्चर आइले आमे कोन कहले पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट तमे रखियो आउ जणे आसीबो ओके सी जणे इस्लामिक स्कॉलर से कहले प्रत्येक टी मुसलमान जदि ये टेररिस्ट ताले मु कोन टेररिस्ट तुम कहले नाही सर आपण टेररिस्ट ताहले एक्चुअली कथा बाहरला कोन ना से पर्टिकुलर व्यक्तिटी जे टेररिस्ट एक्टिविटी करिछि यस ही इज अ मुस्लिम बट ता ब्रेन वॉश हबा जोगुरु से टेररिस्ट एक्टिविटी करिछि तो जेतेବେଳେ तमे मल्टीपल रिसर्चर को व्यू पॉइंट को ऐड कलो तो तमरो जो निजर बायस जोगुरु गोटे स्टेटमेंट देई देथिलो तो सेटा नेगेट हेई गला कि ना नाही एठी वैल्यू न्यूट्रलिटी आसिला ना नाही को तमे एठी वैल्यू लैडन रिसर्च कर देथिलो तम सिंस यू आर अ कट्टर हिंदू तेणु करी कि तमे स्टेटमेंट देदेल रिसर्च टाको हाफ हार्टेड देखिकी जे नाइ मुस्लिम करिछि माने सब मुसलमान होउछथि बट चार जण रिसर्चर आउ जेतेबेले एंगेज हेले तापर से देखिले जे नाइ at the same point जोटी टेररिस्ट एक्टिविटी ହେଇଛି जो माने द पीपल हु आर ब्लीडिंग तांको मुस्लिम लोक माने हेल्प करूछन्ती हॉस्पिटल नवाको तांको मुस्लिम लोक माने पुलिस डाकिचंती आउ जो टेररिस्ट को मारिचंती जो पुलिस वाला सी भी गोटे मुस्लिम टे मारिची ता माने एठी तमे जो स्टेटमेंट देइथिलो 22 ने सेतरे थिला कि नाही यस सर। एंड सर मल्टीपल माने रिसर्चर मानकु एटा इन्वॉल्व कला परे तम रिसर्च स्टेटमेंट रो तमे तापर स्टेटमेंट रो जो बायसनेस टा कमेलो कि नाही जे नाही नाही प्रत्येक टी मुसलमान टेररिस्ट हुआ
किछि ये जो माने रैडिकल हे जाउछन से माने टेररिस्ट जाउछन तम स्टेटमेंट बदलला ना नहीं कुह यस सर। ओके बुझी पालो ना कोन डाउट रहला ନା ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା हम्म ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ସୋସିଆଲି ଡିଜାରେବଲ ଆନ୍ସର ଦେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ବାୟସ ହେଲା ୱାନ୍ ଟାଇପ ତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି କେମିତି ଆଚିଭ୍ ନାଇଁ ହେଲା ନାଇଁ ସେଇଟା ନାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ କହୁଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ହଁ ସାର୍ ସେଇଟା ବୁଝିଲି ଯେ ଏଥିରେ ଡାଇଭର୍ସ ଭ୍ୟू ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ହଁ ନେବା ତାହେଲେ सोशल ହେଇପାରିବ। ହଁ ଓକେ। डिजायरेबिलिटी जोटा तमे कहउछ सेटा एठी अछि रो देखो एटा एठी अछि तमे जो कहउछ इश्यूज इन सोशल जो मेजरमेंट रे एठी अछि सोशल डिजायरेबिलिटी बाय सर एठी होची पार्टिसिपेंट्स में प्रोवाइड सोशली डिजायरेबल आंसर्स माने सपोज तमे जेमति हमें कहिले जे एंड मिसरिप्रेजेंट देयर ट्रू फीलिंग ओके जेमति हमें कहिले जो फैमिली रे तमे सपोज तमे छुआटा को एक्चुअली तमे गाली करूछ बट बाहर आंसर देला बेले जोटा सोशली डिजायरेबल होबो तमे सेही आंसर करूछ ओके सेथि पय बायसनेस आसी कोनरू तमरो एठी सोशल साइंस रा मेजरेबल नुहे बुझी पारलो यस सर। ओके ठीक अछि ताले समस्त को गुड नाइट एंड काली करिवा क्लास Yes, sir. यस करिवा हाउ ठीक अछि ताले कहिबी टाइमिंग केते बेले करिवा ठीक अछि आउ गुड नाइट सी यू